मैं ब्रेक करूं, मैं रिलीज करूं न्यूज़, और एट टाइम्स अनवेरीफाइड किस्म की फिगर्स, वो प्रोजेक्शन उनकी शुरू होती गई। साथ में इस मरतबा आपको पता है कि कितना वक्त लगा है ये अराउंड 6 करोड़ 5 लाख वोटर्स को वोट काउंट करते हुए। सबसे पहले तो ये जहन में ज़रूर रखें कि लेट्स से स्वीडन में 6.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको 10 से 12 दिन लगे थे काउंट करने में 2018 में। इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। हमें कितना लगा, किसी को पता है? और आप सब कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन, पता किसी को नहीं है। मैं फिर पूछ लेता हूं यहां पे फॉरेन जर्नलिस्ट, डज एनीवन नो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंपाइल द रिजल्ट्स in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? नहीं, मैं अगर फिगर है तो मुझे बता दें सर। आई एम आस्किंग अबाउट अ फिगर. डू यू हैव द फिगर? ओके 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 ओके. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just ओ भाई, मुझे बात करने देंगे या नहीं करने देंगे? ओ भाई, मैंने आपसे पूछा कितने घंटों में है, सवाल का जवाब नहीं है। ओ मेरे भाई, नहीं है ना किसी के पास। अब क्यों इस पे आप इतने गुस्से में आ रहे हो? वो देखिए, फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं गुस्से में आ रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि वहां पे इतने अरसे में हुआ है, हमारे यहां इस वक्त कितना वक्त लगा है, किसी को पता है? सब ने कहा नहीं। बस इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। 36 घंटे में 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूं, 66 आवर्स में हुए थे, 66 घंटे में। जब कितने पोलिंग स्टेशन थे आपके ख्याल में? 92,000। चलो मैं खुद बता देता हूं, फिगर नहीं होगा लोगों के ज़हन पे। 92,000 पोलिंग स्टेशन थे, और इसको सिक्योर करने के लिए तरीक़ाकार ये बनाया गया था कि क्लस्टर बनाया जाएगा, वहां पे उनको सिक्योरिटी व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी, और वो आरओ के ऑफिस तक लेकर आएंगे। उससे पहले काउंटिंग होनी थी। आखिर इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त नहीं लगना था। और पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई कि वो जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट, पाकिस्तान में एक स्प्रिंग आ गया, एक इनकलाब आ गया, और उस इनकलाब को रोक लिया गया। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये रियल टाइम में चीजें हो रही होती है ना, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा। अनरीजनेबल हो सकता है, इरेगुलरिटीज हुई है, मैं उसका इंकार नहीं कर रहा हूं, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं। उसके लिए ट्राइब्यूनल से लेकर, कोर्ट से लेकर, इस 2017 का जो इलेक्शन एक्ट इन तमाम जमातों ने पास किया था, उसी के तहत ये प्रोसीजर्स रखे गए ना, या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये प्रोसीजर्स पास हुए थे। मतलब कुछ तो इंसाफ करे ना, और उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है। हम सारे डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड हैं। कमिटेड डेमोक्रेसी में प्रोसेस और प्रोसीजर, हो सकता है वो गलत प्रोसेस हो सकता है गलत प्रोसीजर हो। पाकिस्तान के पास 3-4 तजर्बे आ गए हैं इलेक्शंस के। इंशाल्लाह ये पार्लियामान होगा, ये अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और बेहतर कर ले। ये कोई केयरटेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि मैंने तो उनको प्रोसीजर्स देने थे, वो तो उस एक्ट के तहत चलने थे। एक मिनट, मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लेता हूं। एनी फॉरेन जर्नलिस्ट? Yes. Build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kilasafala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people? We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country. And there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media,
they were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. But it was the reason for delay. Well, of course, look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country. And they had to be brought back from the clusters to the RO offices and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometimes there would be delays in which should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. So why so vehement allegations this time? I'm surprised on that. Yes. सर हमें मालूम नहीं कि आपके पास ये 36 घंटे का फिगर कहाँ से आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये स्टेटेड पोजीशन है कि उन्होंने कहा था कि रात के 10 बजे और रात के फिर सुबह 2 बजे लास्ट डेडलाइन है तमाम रिजल्ट्स को अनाउंस करने की। तो उस हिसाब से तो 9 घंटे बनते हैं, 36 घंटे मुमकिन है आपको इलेक्शन कमीशन ने बताया वो कितना दुरुस्त है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर रात 10 बजे मेरी नहीं आपकी नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये स्टेटमेंट आई कि रिटर्निंग अफसरान को आधे घंटे का वक्त दिया जाता है कि वो रिजल्ट सबमिट करा दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किस बुनियाद पर ऐसा किया गया? और सर इस वक्त अगर देखें आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोलान से लेके वजीरिस्तान तक लोग सड़कों पे बैठे एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के अंदर लोग मर भी रहे हैं। स्टॉक मार्केट सर 1600 पॉइंट आज के दिन गिर गई है और यूरोपियन कैपिटल्स हो या अमेरिका हो सारा इस प्रोसेस के ऊपर डाउट का इजहार कर रहे हैं और आपसे इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने वाले इलेक्शन हारने वालों के हक में गवाही दे रहे हैं। तो सर कल को इस आज और अगर जब दलील से सुनने का इनकार होगा तो मुदल्लल गुफ्तगू की गुंजाइश बड़ी कम हो जाती है। बोलान से लेकर यहाँ तक इस्लामाबाद तक ये 2013 में एहतजाज नहीं होना था। उस वक्त के वज़ीर आज़म के लिए तारीख में आपने सवाल उठाया कि क्या किरदार लिखा जाएगा। इस दफ़ा आपको तारीख लिखने का बड़ा शौक है। 2018 में क्या तारीख लिखने का और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का